into an elliptical parking orbit having a perigee of 170 kilometers, an apogee of 36,500 kilometers, and an inclination of 21.3 degrees. Eventually, the destination of Chandrayaan-3 is the Moon, located 384,000 kilometers away, which will be achieved through a series of orbit raising and course correction maneuvers over the next few weeks. नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर LVM-3M4 चंद्रयान-3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार, अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। TC शार 1 and 2। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook, and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान-2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान-2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान-3। आपको संक्षिप्त में LVM-3M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीय अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है।
इस यान में प्रथम चरण में दो S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed-loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage, C25, ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the mooncraft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोशन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S200 has got 3 segments Roger.
called nozzle end segment, middle segment, and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other, the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टब-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। TCTC SHAR 1 and 2 confirm normalcy of both telemetry 758 carriers. वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation सभी is needed परीक्षण to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSD confirms data from chain. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब -21 minutes. 1 किलोमीटर की Request दूरी all तय की जाती है। stations change over to channel 2. Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. Roger. CNC to TTC director. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की All जाएंगी। stations to note, event number 430 and 431 is completed. Chandrayaan 3 पूर्ण संयोजित और तैयार LVM-3M4 रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। The LVM-3M4 rocket standing majestically against a picturesque background in the second launch pad. Need a natural snack to beat sore muscles post LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. LVM-3 rocket will fly for mission executives on your screen. That's the spacecraft director and associate spacecraft director has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen.
That's the spacecraft director. LVM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle, ferrying Indian and international customer satellites. Vehicle Director to Mission Director. LVM-3 M4 launch vehicle is ready for the Chandrayaan 3 LVM-3 is mission. India's largest and heaviest launch vehicle, ferrying Indian and international customer अब हम satellites. उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर Health is normal and cleared for launch. Mission Director Roger. M4 launch ROD to Mission Director. Range is ready for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 launch. minus 19 minutes. Mission Director अब Roger. हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर Track stations and network is ready to support LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. ROD रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं। All necessary clearances are obtained for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Range Operation Mission Director, Readiness Review Telemetry Committee Tracking and and Launch Command Authorization Director, Board have Satellite already Director given और Vehicle authorization Director, for the Vehicle launch of की जानकारी LVM-3 Mission M4 Director को Chandrayaan देते 3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time. Today, the 14th July 2023, from second launch pad of SDSC Shar. For the launch operation sequence Control Roger. of launch of All LVM-3 stations M4 to know. Chandrayaan 3 Mission mission Director has at given 14 hours authorization 35 for minutes 17 launch. seconds Indian Standard Time. Today, जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर Director has given authorization. एएलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। जी हाँ, अभी आपने घोषणा On सुनी। your screens, मिशन you have डायरेक्टर just ने watched Mission इस लॉन्च Director के Shri लिए S. ऑटोमेटिक Shri लॉन्च Mohan सीक्वेंस Kumar शुरू करने giving का clearance for the अनुमोदन दे initiation दिया of है। automatic launch इसके पश्चात sequence. व्हीकल डायरेक्टर This is based on the confirmation of readiness of all automatic launch participating sequence team शुरू करेंगे। for range, launch vehicle, spacecraft On and your tracking. screens, you have just watched The Mission automatic Director launch Shri S. sequence is Shri scheduled to Mohan Kumar begin giving at clearance T for minus the 14 initiation minutes of automatic 30 launch seconds, sequence. as a part of This is which based on the the most confirmation of critical readiness control of system all elements are participating checked team for range, for the launch vehicle. spacecraft, Minus and 17 tracking. minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard Roger. computers. VLCC to LCC no As a part of to which not the most critical Timing व्यूअर्स confirmed गैलरी by दर्शकों से external खचाखच भरी हुई। for the launch Roger. minus 17 minutes. बहुत भारी संख्या में Very यहाँ close to the लोग launch उपस्थित time, हुए हैं। control आप सभी will be का passed हार्दिक on to स्वागत the है Roger. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। LCC no to not timing व्यूअर्स confirmed गैलरी by दर्शकों से external खचाखच Enthusiastic भरी हुई। viewers from all across the country gathering at Satish भारी Dhawan संख्या Space में Center यहाँ launch लोग view उपस्थित gallery हुए for हैं। witnessing आप this सभी का historic हार्दिक moment स्वागत है। Data of logger, Chandrayaan Aranak 3 Shawan and launch. Shatu stations. Copied. Enthusiastic viewers from all across the country. The countdown gathering for at Satish Dhawan LVM-3 Space Center M4 launch Chandrayaan view 3 gallery mission for witnessing has this lasted historic moment for 25 and a half Chandrayaan hours. 3 launch. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. While of operation of hydrogen tank. During countdown, the launch vehicle Minus stages the are Countdown serviced for with LVM-3 propellants. Vehicle Director M4 to Gas Chandrayaan bottles 3 meant mission for stage Vehicle operations are Director charged, authorizes 25 and a half while the hours. Earth storable Automatic launch propellant sequence filling was for the concluded LVM-3 more than Chandrayaan 3 16 hours ago. LSC The cryogenic propellants servers The launch activated. vehicle MC stages confirms are data from serviced Shravan with and अभी अभी gas कंफर्म bottles किया meant गया for है stage व्हीकल डायरेक्टर operations are श्री charged. बीजू सी थॉमस While the ने Earth storable ऑटोमेटिक लॉन्च propellant सीक्वेंस शुरू filling कर was दिया है। concluded अब more than यह 16 hours लॉन्च ago. व्हीकल LVM-3 Cryogenic M4 propellants रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजू सी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक We are very close to the launch, इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. We are very Up close next, to the we will launch. watch a curtain raiser The day video of launch on wind this biasing machine. data is fed during the Request countdown CGSS to to the confirm onboard supply of computers Tier 2 to to Cryo. enable most suitable steering. Up next, we will watch a curtain raiser video on this mission. Moon,
This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. The only natural satellite of the Earth. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to human understanding of the evolution of the solar system. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The 4th country to reach the surface of the moon in November. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragya. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moon quakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. इसरो के Let अध्यक्ष us wish श्री them एस well सोमनाथ। in this great endeavor called अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन
की यात्रा को बताया गया है। आपके सामने हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। श्री एस सोमनाथ, अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से Chandrayaan 3 has two predecessors with destination Moon as their mission objective. ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan 1, launched by PSLV C11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan 2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. Lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LBM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। मॉड्यूल का मुख्य ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन लगे हुए हैं। की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. Speaking about the major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. The Chandrayaan spacecraft, and next it is now that the propulsion module separates from the lunar module orbit insertion when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. Mark the fourth phase. The Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase. The moon is achieved. And then the most awaited landing phase takes place. Carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase. And then the आपके most सामने है awaited मिशन landing नियंत्रण phase कक्ष का takes place. दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा Most हो of रहा you है। might recall the Chandrayaan 2 mission दर्शक दीर्घा भी इस and the इंतजार पे। intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. Most of you might recall the Chandrayaan
2 mission and the intense The launch moments view when gallery all the enthusiastic with the Indians overwhelming were crowd of waiting visitors. for the touchdown of the lander on the surface of Moon. The launch view gallery पूरे दर्शक दीर्घा with the यहाँ बहुत overwhelming उत्साहित। crowd of visitors. मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 पूरे minutes दर्शक from the दीर्घा scheduled यहाँ launch बहुत time. उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 ऑटोमेटिक is लॉन्च upgraded सीक्वेंस in जारी several है। aspects इस दौरान for the सभी संचार enhanced तंत्रों की robustness स्वास्थ्य जांच, through बैटरी extensive आवेशन ground पूर्ण किया जा tests चुका and है। simulation. कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 कुछ minutes. अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। S200 के L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब We are close to 1.5 सेकंड पर minutes from the scheduled launch S200 time. बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। We are close to पूरे 1.5 भारतवर्ष minutes की from the आंखें इसमें scheduled हैं। launch time. इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर सब उपस्थित -50 seconds. All sequencers armed. Stage ready. -45 seconds. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 -35 open. seconds. All sequencers armed. Stage ready. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. MOV 79 -20 open. seconds. -15. Real-time programs activated. -25 seconds. 9, L110 8, VSPP open. 7, 6, 5, 20 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. -15. +5 seconds. 9, 8, Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का
Lift-off normal. Here we यह have भीम का majestic रॉकेट liftoff of आसमान को L1 चीरते हुए L4 अपनी rocket भयानक carrying दहाड़ India's से चारों ओर prestigious कंपन Chandrayaan उत्पन्न 3 कर रहा है। spacecraft. इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। यह भीम का रॉकेट LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। As the rocket और is यही soaring दहाड़ है through जो the clear वैज्ञानिकों skies, को every रोमांचित second करती moving है। closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to के moon. उत्थापन के साथ ही Every हमारे Indian अंतरिक्ष यान witnessing the चंद्रयान launch 3 live is की content with यात्रा the feeling प्रारंभ हो चुकी है। of watching history in the making. As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the moon. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के S-200 लिए motors चंद्रयान thrusting 3 अपने मिशन simultaneously, को पूरा करने generating a निकल peak चुका है। thrust of close to 6,000 kilonewtons in वर्तमान में vacuum. दोनों S-200 They are made of HTPB-based solid propellant. निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर 204.5 बढ़ tons रहे in हैं। each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. Generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. शुरू हो चुका है of hypergolic earth storable liquid propellant UH-25 and N2O4. The core stage has also now the S-200s have been separated. This stage, based on combination 200 stages are घटनाक्रम के अनुसार यह यान of hypergolic इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 जो तरल नोजल पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। येलो डायमंड रिंग्स का 5 रुपीस बदलाव और सब करोड़ चिपको चिपकाओ। टेस्ट भी बढ़िया, चिपको टॉयज भी। नमस्कार शुभ संध्या प्रतिदिन को आपको स्वागत करछु मु सुप्रिया। प्रथमे आसु नजर पकाइबा हेडलाइंस ऊपर। पेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से क्योंकि महानगर ट्रेन ट्राजेडी मामला रे 3 जन को गिरफ्त कला सीबीआई। सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान, टेक्नीशियन पप्पू कुमार अरेस्ट। अपराध घटाई जाने की प्रमाण लुचाई अभियोग। डीएन साम्राज्यर आर्थिक कारबार को नहीं बढ़ुची संदेह। चली 30 कोटी क्षोभजा 105 कोटी रियल एस्टेट बिजनेस आईटी स्कैनर को आसवा पर भी कहीं चुप ओरेरा उठिला प्रश्न। तेने जीएन सह लिंक अभियोग आनी बीजेडी को घेरिले विरोधी। फलकनुमा एक्सप्रेस रे भयंकर अग्निकांड। हावड़ारू सिकंदराबाद जिबा बेले तेलंगानार यादाद्री भुवन